Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 29 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, I have shown you the example program distance class that have an exception class inches ex, and that class throw an exception whenever the value of the inches is greater than or equal to 12. So जो टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट इट चेक whether the value of inches is greater than or equal to 12. If it is, it will throw a inches ex exception by creating an object of that class inches ex class का जो object है वो बना के, और the control will be transferred to the corresponding catch block. And the other point is the function getDest, जहाँ पर हम यूज़र से वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, एंड इफ़ द वैल्यू इनपुट बाय द यूज़र is greater than or equal to 12 for the inches data member, then it will throw again the same exception. Then we have seen rethrowing an exception with argument, how we can specify argument with an exception, that whenever an exception is thrown, the two things are passed to the catch block. The first one is the control, the second one is the object of a exception class, and then with that object we can access the private data member of that or public data member of that class. So उस पर हमने देखा था कि data member को हमने private रख दिया था, and we initialize those private data member or public data member at the time of throwing an exception. ठीक है, and then उन objects की value we can access in the catch block, corresponding catch block. Then a bad alloc class. This is a class. This is the exception that is thrown whenever there is some problem in the allocation of a dynamic memory by using a new operator. And then we have also seen a set new handler function. That the name of the function is set underscore new underscore handler. That function is used to set a handler function. A handler function is a function that is invoked whenever an object of whenever the memory allocation, जब हम new operator के through memory allocate करते हैं, अगर उस memory allocation में कोई problem अगर हो गया है, then that handler function will be invoked, right? So in today's lecture we will start with the handler function. I'll show you an example program how we can mention a handler function using a set new handler function. So set new handler function is a built-in function that is in C++ library. Through that function you are able to set or register, we will say register a handler function, और handler function जो है वो user defined function होगा, and that function will be invoked anytime when the new operator is failed to allocate memory anywhere in the program. Then we will see a standard library exceptions hierarchy. Example programs, today we will see two example programs. So standard library exception hierarchy में I will show you the hierarchy, the built-in classes for the exceptions, and then we come to the example program. The first program we will see is the Q class using an array. So we will implement that program, and then first we write a simple program that is for the integer, and then we will convert it into the template and use the exceptions wherever possible. And then a linked list data storage class. So linked list data storage class एक बनाएंगे हम, उसके बाद इसको भी template की form में convert करेंगे, and then template की form में convert करने के बाद we will also put the exceptions wherever required in that class, right? Handler function. So this function will be called if new fails. If we try to allocate memory using a new operator, any type of memory, and if that operator fails to allocate memory, then the handler function will be invoked. So this provides a method to handle all new failures with a uniform approach. कि आपके प्रोग्राम में अगर 10 या 20 जगह भी new operator use हो रहा है to allocate memory, then in case of failure of any of that new operator, only a handler function will be invoked. So it provides a uniform approach to deal
all the new operators that are used in your program. So how we set handler function? So handler function is a user defined function. We use built-in function set new handler function to register a handler function, right? So set new handler function को हम basically function pointer pass करते हैं handler function का, and then that handler function will be invoked whenever in your program the new operator is failed to allocate memory dynamically. So if new fails to allocate memory, then if handler function is registered, then it is called, and if handler function is not registered, then it will invoked, it will throw bad alloc exception, new operator. So if new allocates memory successfully, it returns a pointer to that memory location, and if new operator fails to allocate memory, so अगर new operator fail हो जाएगा memory allocate करने में, then if the handler function is registered, then it will execute the handler function, and if handler function is not registered using the set new handler, then it will throw a bad alloc exception. Now let's see the task performed by the handler function. So it make more memory available by deleting other dynamically allocated memory and return to operator new to attempt to allocate memory again. So it performs one of the following tasks कि वो जो प्रोग्राम में और कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई हुई है उसको डिलीट करने की कोशिश करता है, and then it can transfer the control to the new operator to attempt to allocate the memory again, or it throw an exception of type bad alloc. It can throw an exception of that type and call a function abort function or display some message and then terminate or abort from the program. ठीक है, वो प्रोग्राम से एग्जिट भी हो सकता है, मैसेज डिस्प्ले कर दे there is some problem in allocating dynamic memory, and then it calls the exit function to exit the program. So these are the functions that are performed by the handler function. Example, so this is an example program, and in this program we have a custom new handler that is our handler function. That function will be invoked whenever there is some problem in allocating the memory using a new operator. But how we have to tell? We have to tell there must be some mechanism to tell the compiler, C++ compiler, that this is a function that must be invoked whenever the new operator fails to allocate memory, and that function is set new handler function. So we call a set new handler function, pass it to the function pointer of custom new handler. So now this function will be invoked, custom new handler, whenever new operator fails. So इसको हमने ये register करवा लिया है. जो main की second line है, main function की second line है, it is the line, and it is a function call in which we are calling a function set new handler and registering a handler function with name custom new handler. ठीक है? So this is a array of pointers containing 50 addresses, 50 pointers that points to the memory location where you can store double type of value, and then in each loop iteration, हर loop के iteration में आप इतनी बड़ी value को memory allocate कर रहे हैं, इतने bytes को memory allocate कर रहे हैं, and then you try to store allocate the memory. This new operator will allocate these much byte where we can store double type of data and assign the address to ptr ith index. So when the new operator fails, because this is very large number, right? So if you allocate it 1 or 2 times, maybe there is no problem, but if you allocate it 50 or 60 or more than that time, then, or even if you exceed from 10, then there is some problem that maybe the memory in the RAM, if it is 2 or 4 GB, that will become filled up, or all the RAM is filled up, and then that operating system won't allow new operator to allocate memory, and then it will call a function custom new handler.
ठीक है. सो रैम की जो स्पेस है वो एक हद तक फिल्ड हो जाएगी. जब वो फिल्ड हो जाएगी देन द ऑपरेटिंग सिस्टम वोंट अलाउज योर प्रोग्राम टू एलोकेट memory further in the RAM, and then the new operator fails to allocate memory. At that point it will execute or invoke custom new handler function. ठीक है. सो उस टाइम पे वो custom new handler function को कॉल करेगा and then that function will be executed. So इसमें हम मैसेज जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं custom new handler was called and then we call abort function that will exit or terminate from the program, right? So this is the diagram or hierarchy that show the standard library exception hierarchy. This hierarchy is headed by the base class exception defined in the header file exception, which contains virtual function wrt which derived classes can override to issue appropriate error message. ठीक है. तो हमने पहले भी exception class में देखा था कि we can call this function wrt function that tells basically the name of that class, right? So immediate derived classes of the base class exception includes runtime error, so that is the immediate base derived class, and the other immediate derived class of the exception class is the logic error, right? So each of which has the several derived classes. So class logic error, this logic error class is the base class of the several standard exception classes that indicate error in program logic. For example, invalid argument exception indicate, this class indicates that an invalid argument was passed to the function. Class length error indicates that a length larger than the maximum size allowed for the object being manipulated was used for that object, and out of range class indicates that the index of the array is reaching outside, is reaching out of its value. For example, array का अगर size हमारे पास 5 है and if we are trying to store the value on the 6th or even the 5th index, then it is not possible and then that exception can be thrown. So it tells that the index of the array is exceeded than its allowed range, right? So these are the standard exception classes, library classes. You can find the details of these classes in the C++ documentation. Now let's go through the summary of a template and exception. So an exception is an indication of a problem that occurred during a problem's execution. Exception handling enables programmer to create program that can resolve problems that occur at execution of the program, that is at runtime. So exception handling enables the programmer to remove error handling code. So error handling code जो हम लिखते थे if condition के अंदर हम चेक करते थे function जो हमने कॉल किया उसकी return value. If that return value so that return value show indicate that whether that function is executed successfully or not. For example, fopen function को हम check करते थे. If we call the fopen function and we check if fopen function returns null, if it is, then it doesn't open the file successfully for any reason, and if fopen doesn't return null, then this means that file has been opened successfully. And file descriptor contains the pointer that points to the memory location where the file is stored. Right? So ये जो error handling code है इससे निजात मिल जाती है. हर function के साथ we do not need if else. So try block define a block of code in which exception might occur. At least one catch handler must immediately follow a try block. So catch handler specifies an exception parameter that represents the type of the exception the catch handler can process. So we can have a multiple catches and each catch block represents a particular type of exception. So point in the program at which an exception occurs is called throw point. When a try block terminates, local variable defined in the block go out of scope. ठीक है. So अगर आप मेन फंक्शन के अंदर ऑर्डिनरी एग्जांपल लें, इफ वी हैव अ मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर आप एक ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करें, करली ब्रैकेट क्लोज करें एंड विद इन दोस करली ब्रैकेट, एक तो मेन फंक्शन की करली ब्रैकेट्स होगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट टेल्स वेयर द मेन फंक्शन स्टार्ट एंड वेयर इट एंड्स. So within that main function you write another
opening bracket and closing bracket. I will do it when I write a program. So अभी इसको ज़बानी एक दफ़ा देख लें. So अगर मैंने ये जो एक और ब्रैकेट का सेट मैंने अंदर लिख दिया है और इस ब्रैकेट के सेट के अंदर अगर मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, देन इसका स्कोप, उस इंटीजर का स्कोप उन ब्रैकेट्स तक ही लिमिटेड है. दैट इज़ व्हेन द कंट्रोल ट्रांसफर, व्हेन द कंट्रोल इज़ इनसाइड दोज ब्रैकेट, it creates the memory, it allocates the memory for those variable. We can use those variable, but when the control goes outside those bracket, that is from the closing bracket, within the inner bracket में जो closing bracket है उसके बाहर जब control जाएगा तो तमाम variables को जो उसके अंदर create किए गए थे उनको memory deallocate हो जाएगी. So when a try block terminates, local variables defined in the block go out of scope. So जो भी try block के अंदर अगर आपने कोई variable define किए हैं उनका स्कोप ख़त्म हो जाएगा. So common example of exceptions are out of range array subscript, arithmetic overflow, division by zero, invalid function parameters, and unsuccessful memory allocation. So these are the example of some of the example where we can throw an exception. Destructors are called for every object constructed in a try block before an exception is thrown. So जिस point पे exception occur हो जाएगी, before throwing an exception and transferring the control to the cache block, the destructor for those objects that are created are called. ठीक है? If an array of object has been partially constructed when exception occur, only the destructor for the constructed array objects will be called. So array अगर 10 size की है और आप object क्रिएट करके अरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करें या हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, सो जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज प्रोग्राम 1. सो दिस इज द एंड ऑफ अवर एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर. सो let's go through the exercise program 1 where we create a queue data structure and we use template in the queue class, and also we will put the exception wherever possible. Okay, so a queue is a data storage device or a data structure. So queue principle is first in first out. It's the same principle you see the queue in journal, for example the queue outside the bank maybe, right? So in which the person that first inside the queue, that first come inside the queue will be first out, will be entertained first. ठीक है? So जो पहले आया है वही पहले exit होगा queue में. That is the principle of queue. While the principle of stack is last in first out, right? Now write a class template for a queue class. Also check if the queue is full or empty and throw an exception if it is. So जब queue full होगी या queue empty होगी उस point पे हमने exception भी throw करनी है, and we have to write a template class for a queue, right? So that means कि queue can be, we can create an object of a queue class that store floating point value. We can create an object of queue class that are able to store, for example, integer or character values, right? Let me demonstrate the principle of queue. For example, this is a private data member of a queue object, an array of 5 elements. Suppose कर लेते हैं हम कि हम 5 elements की array लेंगे, right? And I assume that the type of these elements are integer. So template के case में it could be float, character, so it is decided the creation of the object. And the other data that is used in case of stack, we have array and then we have a handler or a pointer top, right? In case of stack, that points to that contains the index of the array where the top of the stack is. ठीक है? So stack का जो top होता था उस पे उसका जो उस element का index था. For example, stack में हमने एक value insert की, यहाँ पर 0th index पे top की value 0 हो जाएगी. एक और value insert की, top की value 1 हो जाएगी. एक और value insert की, top की value 2 हो जाएगी. Next value, top की value 3 हो जाएगी. Now in stack we have to insert the value from the top and we have to delete value from the top. So if you want to delete that value, you can display that value and decrement the top. So top decrement होगा top जहाँ पर point कर रहा है इस point पे, ठीक है? That is top के पास value जो है वो second है, 2 value है, right? That means A of top is this element, right?
Now if you want to insert another element in the push another element in the stack, then what you do is you increment the value of top and then you insert that value on A of top. So that is how stack work. In case of queue, we need two such kind of variables like top. One is front and the other is rear. ठीक है? So queue का एक front होता है, एक rear होता है. The elements are always inserted from the rear. So queue में जब if you want to enter in if you want to be the part of the queue or if you want to stand in the queue, तो आप queue में किस तरह से आखिर से जाके खड़े हो जाएंगे, वेट करेंगे अपनी बारी का, और एग्जिट कहाँ से होंगे, जो फ्रंट से वहाँ से एग्जिट होंगे. ठीक है? देन यू मूव फर्दर फॉरवर्ड. So in queue we need two such things, that is front and rear. So the values are always inserted from the rear side. So rear के side से values insert होंगी, and deletion from the queue is always from the front, right? So let me demonstrate this. Initially the value of front is -1 and the value of rear is -1. So दोनों की values हमारे पास -1 and -1 है, right? And then let's see how we can insert element. So before inserting an element we can check if the rear is equal to 4. अगर rear की value 4 हो जाएगी तो वो insert नहीं करेगा, इसका मतलब है queue full हो चुकी है. ठीक है? So when we insert an element, first element, ये जो rear की condition जो है कि rear is equal to 4, इसको हम देखेंगे अभी बाद में. ठीक है? Let's insert some element in the queue, right? So हमने क्या किया कि rear को ++ किया. सबसे पहले ये that is a pre-increment. It will increment the value of rear. So the value of rear becomes 0. Then it will insert value 10 at 0th index of A array. So value 10 comes over here. ठीक है? And then it will check if front equals to -1. ठीक है? Front की value क्या है? Initially -1. This means that queue is empty. So जब front की value अगर -1 है, उसको ++ करके 1 ++ कर देगी. So it value becomes 0. This means that at 0th index में जो array का है, that is the front point of the array. ठीक है? और rear क्या है? That is 0, right? So if we want to insert another element in the queue, what we can do is we first increment the rear. So value of rear become 1, and then we insert at A of 1 the value 12. 12 वहाँ पे insert कर देंगे, right? And then let's insert another value. So this is the pre-increment plus rear, that is a pre-increment that should be performed first. So ये सबसे पहले ये increment होगा, उसके बाद when this is increment the value of rear become 2. So A of 2, that is A array के second जो second index है, that is the third element, that become 14, right? So that is how insert work. Now the front is 0, the rear is 2. So we always insert from the back side. So rear जो है वो increment होता जाएगा, front वहीं पर रहेगा. Let's say if we want to delete the element, how we can delete that element? So we first check this condition. If front is equal to -1 or front is greater than rear. So front is greater than rear. We will see this condition later on. ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी कि अगर हम यहाँ पर 2 elements और insert करें, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास हो A and plus rear is equal to 16, A plus rear is equal to 18. So 16 और 18 यहाँ पर आ जाएंगे. उस टाइम पे rear की वैल्यू क्या होगी? Rear की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, right? And then if we try to insert another element in that queue, then we have a condition. If rear is equal to 4, that is rear is equal to size -1. Size is the size of this queue -1. So अगर rear का size 4 हो चुका है, this means that queue is full. So हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे queue is full, and then this becomes in the else part. ये चीज़ जो है ना, ये else part में आ जाएंगी. ये मैं तमाम चीज़ें अभी आपके सामने कोडिंग करके बताऊंगा. First we will try to understand that problem. And then during the deletion process, we first check if the value of the front is -1. If it is -1, then this means that there is no element in the queue. Or if the value of front is greater than rear, उस टाइम भी queue में कोई element नहीं होगा. ठीक है?
ये कंडीशन कब अकर होगी? let me show you how when this condition will be true. So when this condition are false, when these two conditions in the if statement are false, ठीक है, ये जो हमारे पास कंडीशन आ रही है if में कंपाउंड कंडीशन, अगर दोनों फॉल्स होंगी तो तब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट एफ. वी विल प्रिंट द वैल्यू एट द फ्रंट इंडेक्स ऑफ एथ अरे. ए अरे के फ्रंट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 10, दैट विल बी डिस्प्लेड एंड देन वी विल परफॉर्म फ्रंट इज प्लस प्लस. सो वैल्यू ऑफ फ्रंट बिकम नाउ 1. नाउ दिस मीन्स दैट क्यू का जो फ्रंट है वो 1 है, 1th इंडेक्स है एंड रियर इज 2. सो देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन द क्यू नाउ. ठीक है, ऑल्दो वो 10 वैल्यू जो है वो अरे में उस टाइम पे लिखी रहेगी, राइट, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्यू, बिकॉज जब हम प्रिंट करेंगे क्यू को विल स्टार्ट द लूप फ्रॉम द फ्रंट एंड विल गो टू द रियर. ठीक है, सो हम फ्रंट से स्टार्ट करके रियर तक जाएंगे. इन दैट केस दिस वैल्यू विल बी इग्नोर्ड, राइट. एंड सिमिलरली इफ वी गो फर्दर, अगर हम यहां से थोड़ा सा आगे और चलें, एक और दफा डिलीट का फंक्शन कॉल करें, द वैल्यू ऑफ फ्रंट बिकम नाउ देन 2. फ्रंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट. इसका मतलब है फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम हो जाएगी. दिस मीन्स दैट देयर इज ओनली 1 एलिमेंट इन दैट क्यू. देन एक और दफा डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे, द वैल्यू ऑफ फ्रंट बिकम 3. 2 अब नहीं रहेगी. ठीक है, जब वैल्यू 3 उसकी हो जाएगी इसका मतलब है उसने 14 डिस्प्ले कर दिया, फ्रंट को 3 कर दिया. नाउ इफ वी कॉल दैट डिलीट फंक्शन अगेन, ठीक है, तो उसमें दिस कंडीशन इज ट्रू. नाउ front is greater than rear, that condition becomes true, and when that condition becomes true, this means that there is no value in the queue. Queue में कोई value नहीं है, queue is empty because this is rear and that is front, third index पे. ठीक है, then if we call insert value function, it will insert value at this point and increment the rear part. ठीक है, अच्छा, दैट क्यू इज नॉट अ सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि वो इन एलिमेंट्स की स्पेस को यूज करना शुरू कर देती है. ठीक है, सो वी विल जस्ट मेकिंग अ सिंपल क्यू, नॉट अ सर्कुलर क्यू, राइट. I hope you understand this program. Now let's write this program with a simple data structure, with a simple data to store, that is integer के through हम करेंगे. Then we will try to convert it into template. ठीक है, and then we will write an exception for the full or empty. ठीक है, either the queue is full or empty. Okay. No, not first main function, but we have to write a class q. So first हम सिंपल तरीके से लिखेंगे डाटा स्ट्रक्चर. इसमें अभी वो टेम्पलेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे. लेट्स से वी हैव अ इंटीजर q, so name is a, size is max को हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं. Define max, let's say 5. max को define कर दिया. integer front and integer rear, so ये दो values हमने ले ली हैं, and these are the private data member of the queue. public data member. So public data member में हम क्या करेंगे कि we initialize front and rear with -1, not in constructor. So first we write a constructor and we initialize front with -1 and rear with -1. So that is a constructor, and then there is a function void insert. So
सो वैल्यू इंसर्ट करनी है. किस टाइप की इंसर्ट कर सकते हैं? क्यू की टाइप क्या है? इंटीजर है. सो वैल्यू जो इंसर्ट करेंगे वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू इंसर्ट करेंगे. लेट्स से x इज द वैल्यू दैट वी वांट टू इंसर्ट. सो हियर वी विल सी फर्स्ट, we'll check the condition if rear is equal to max minus 1. अगर rear की वैल्यू max minus 1 के बराबर हो चुकी है, that means Q is full. So see out, we display the message Q is full. And then in the else part, so else part में हमारे पास we have to insert that value in the queue, and we have to consider that if the front is -1, that is we are going to insert the first element, we have to increase, we have to make that value equals to 0, right, or front plus plus. उसकी वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दी है. That is the front of the queue. And then so let's say इसको हम A array नहीं लेते, इसको Q array ले लेते हैं. And Q के we ask the user to input the value, enter value in queue or enter value C in array के किस इंडेक्स में हम ऐड करेंगे? प्लस प्लस रियर इंडेक्स पे, राइट. That is the else and that is the closing bracket of insert function. ठीक है. So हमने insert कर दी value, rear को पहले increment किया and then q of rear में value insert कर दी, right. And then we have to write a delete function void. Okay, we have to write a del function because delete is the keyword already. So delete को कोई पैरामीटर पास करेंगे नहीं, बिकॉज डिलीट हमेशा फ्रंट से होगा. ठीक है. सो वी हैव टू डिलीट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, बट वी हैव टू चेक वन कंडीशन, दैट इज इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर. सो इन दोनों कंडीशंस को हम चेक कर चुके हैं. मैं स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ दोनों कंडीशंस के बारे में कि कब अगर इनिशियली फॉर एग्जांपल हमने क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड वी हैवंट इंसर्ट एनी वैल्यू इन दैट क्यू, देन द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज -1. सो उस केस में हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे क्यू इज एम्प्टी. एम्प्टी. Then in the else part हम क्या करेंगे कि we print, we display the value of the deleted element from the queue. वो एक्चुअली एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, हम बेसिकली फ्रंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे. फ्रंट पहले जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को या क्यू ऑफ फ्रंट को हमने डिस्प्ले कर दिया, देन वी इंक्रीमेंट फ्रंट, राइट. सो Q of front and then we perform front plus plus, front की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, right. So that is the delete function, and then we can have a display function that display the
display the content of the queue. जो भी values आपने insert किए उनको display कर दे, right? So before displaying, we must check the condition if front is equal to -1, then we display the message cout queue is empty, and I think we also must check the condition if front is greater than rear, then it also display the message queue is empty, same as we have in the delete function. जो हमारे पास delete function है उसमें भी ऐसे ही आ रहा था, right? And then in the else part, we have a cout, और cout में हम not cout, first we have a for loop for I equals to, we have to start printing the queue from the front and goes up to rear, increment the value of I, then we print that value queue of I. And then cout so एक ही लाइन में इसको डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, विद कॉमा सेपरेटली. Then cout end line, ठीक है. So we have a display function, delete function and insert function in the queue class. Okay, so ये तमाम functions बन गए. Now let's write the main function and create a queue object. So that is very simple now, without template, without exception, ठीक है. We just want to check that class first and then we'll convert it into the template, and then we will write some exception, for example for empty and for full, right? So queue का object बनाते हैं q1, and now let's try to insert q1 dot insert 10, q1 dot insert value 12, q1 dot insert value 14. So ये तीन values हमने insert कर दी. Now let's call the display function q1 dot display and system pause. So display होगा जो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट की है वो पहले डिस्प्ले होगी, फ्रंट. So that is the front of the queue. Now फ्रंट पे कौन सी वैल्यू की 10, then 12, then 14 is at the rear of the queue. So सबसे पहले जो वैल्यू डिस्प्ले होगी by the display function, that is the 10, then 12, then 14, ठीक है. Now let's compile this program. Okay, I think semicolon is missing over here. Okay, I is not declared. We should declare integer I. Okay, now there is no error. Let's run the program. Okay. So we got the console. Let me change the properties so that it is visible to all of you. Size 50, layout is 55 and 13. So enter value, because we call insert function first, so value is, let's say but if we call insert function, why it is asking for enter value?
so there's no need to write this parameter actually. I think that is my fault. So there's no need to pass any value to the insert function, right, because we are asking the user over here to input any value. ठीक है, so यहाँ पर हम इससे पूछ रहे हैं, so we just simply call the function. ठीक है, compile and now execute. So enter value, let's say value we enter is 7, 8 and 9, and then after 3 time insert function we call a display function, so display the value 7, 8, 9. ठीक है, now let's delete one value, हम यहाँ पे display करते हैं, then we print a message after deleting one value, end line, and then we call a function q1.del, then display the content. ठीक है, and then let me copy and paste it after deleting another value. So एक और दफ़ा डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे और डिस्प्ले करेंगे कंटेंट को. देन आफ्टर डिलीटिंग थर्ड वैल्यू अब क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट. कंपाइल इट फर्स्ट, डिस्प्ले इट, सो एंटर वैल्यू 1, सो लेट्स से 6, 7, 8. ओके, 6, 7, 8 तीन वैल्यूज इंसर्ट की, सो क्यू इज बिलो, उसको डिस्प्ले कर दिया 6, 7, 8. नाउ आफ्टर डिलीटिंग वन वैल्यू, एक वैल्यू को डिलीट करने के बाद डिलीटेड एलिमेंट इज 6, क्यू इज बिलो. सो लेट मी चेंज अ लिटिल बिट दिस, लेट मी राइट हियर एंड लाइन, so that now let's compile and execute now. So 5, 6, 7. Okay, so the queue is below 5, 6, 7, 5, 6, 7. After deleting one value, delete का function call हुआ, delete element कौन सा कर रहे हैं, 5 को delete किया है, that is the front of the queue, the value that is inserted at the first place. ठीक है, now the queue is below, we call the display function then, that is 6, 7. Now after deleting another value, the value we delete is deleted element is 6. ठीक है, then the queue is 7, just एक इसमें रह गया. remember, now after deleting third value, deleted element is 7, then when we display the queue, it says that queue is empty, press any key to continue, right? Now if we, this is the check for the thing that when the queue is empty, it displays the message queue is empty. Now let's try to insert more than 5 values. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I call 6 times insert function, then display function. Let's check out that whether it display the message queue is full or not. 2, 3, 4, 5, 6. So when value 6 is inserted, it displays the message queue is full. So 1, 2, 3, 4, 5. It shouldn't. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 6 वैल्यू जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो चुकी थी. ठीक है, सो 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू सक्सेसफुली एंटर हो चुकी थी. ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये एंटर नहीं हुई थी. लेट मी डिस्प्ले द मैसेज ओवर हियर कि किस वैल्यू को एंटर नहीं कर सका. क्यू इज फुल, कैन नॉट इंसर्ट कौन सी वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते. ओके, वो यूजर से इनपुट ली नहीं हमने. ठीक है, okay, let me execute it once again and tell you what is happening.
सो 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, 5 वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी हैं बिकॉज तभी आपके पास ये प्रॉम्प्ट आ रहा है एंटर वैल्यू. सो ये वैल्यूज 5th वैल्यू मैंने इंसर्ट करने के बाद एंटर की प्रेस की, इट कॉल द इंसर्ट फंक्शन अगेन. इफ यू गो टू द कोड, इट कॉल द इंसर्ट फंक्शन एट द 6th टाइम. जब ये फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल विल बी ट्रांसफर हेयर एंड इट विल चेक दैट रियर इज इक्वल टू मैक्स -1. सो रियर इसके बराबर हो चुका है. इट डिस्प्ले द मैसेज क्यू इज फुल. से मैसेज डिस्प्ले कर दे क्यू इज फुल. एंड देन बाकी एल्स पार्ट था, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फंक्शन कंप्लीट हो गया, कंट्रोल विल बी ट्रांसफर बैक टू दिस पॉइंट एंड देन द नेक्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज d1 डॉट डिस्प्ले. तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, it display the content of the queue. Okay, now let's try to convert that queue into the template. For that we use a keyword template class a type. ठीक है. So queue की type क्या होगी? a type की queue है. And क्या हमने front और rear की type को भी change करना है? No. Why no? Because they are the index of the array. So index of the array are always integer value. So अगर array आपके पास integer type की है, float type की है या array of objects है, even उसके भी जो indexes हैं, they are the integer value 0, 1, 2, 3, right? So there is no need to change this value over here, right? And no need to change value over here as well. So let's say if we have a type value input by the user, then we can input that value over here, input, then we assign that input here like this. ठीक है. So type जो input हमने लेनी है that is input और वो a type की होगी. ठीक है. And now yeah, that's it. So let's specify the type over here, that is it is int type q. Okay, perfect. So if we compile and execute it, enter value 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, it's worked perfectly fine. Let's create a floating type queue, float type queue, and insert only 5 values on that queue and then display them. So compile it and execute it. Now 2.5, 3.2.3, 2.2, 2.1, 2.0. तो उसने तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया. सबसे पहले वैल्यूज़ जो थी वो 2.5 थी, then 2.3, 2.2, 2.1 एंड 2.0. सो तमाम वैल्यूज़ को उसने डिस्प्ले कर दिया है. सो दैट इज़ परफेक्ट. वी कन्वर्ट अवर क्यू प्रोग्राम इनटू अ टेम्पलेट. ठीक है. लेट्स चेक इट फॉर द कैरेक्टर एज वेल. नाउ दिस इज द कैरेक्टर क्यू. दिस मीन्स दैट this queue is become the character queue. Now in that case, let's check out by executing the program. Value are A, B, C, D, E. Yeah, it worked perfectly fine. ठीक है. Now यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि we can convert that queue to for a distance object. ठीक है. हम distance की class बनाएं. यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, बट उसमें ये ज़रूरी है कि हमने इस ऑपरेटर को वी हैव टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर फॉर द डिस्टेंस क्लास. ठीक है. वी हैव टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर एंड वी हैव टू ओवरलोड दैट ऑपरेटर एज वेल. ठीक है. हमने इस ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना है डिस्टेंस क्लास के लिए. दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन बिफोर, राइट. हमने ओवरलोडिंग के चैप्टर में देखा था व्हेन वी आर ऑन द ओवरलोडिंग टॉपिक दैट हाउ वी कैन ओवरलोड स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर.
ठीक है. So we have to overload stream insertion and stream extraction operator for any class whose type we want to mention over here, and then we can convert, we can make a queue that can hold a object of a distance class. ठीक है, एक ऐसी क्यू बना सकते हैं जो कि डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकती है, बट फॉर दैट वी हैव टू ओवरलोड स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. व्हाई? बिकॉज जब यहाँ पर हमने टाइप मेंशन कर दी ए टाइप इज़ अ डिस्टेंस टाइप, तो ये क्यू बन जाएगी डिस्टेंस टाइप की. ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइप की, ये डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इनपुट, और हम इस डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट में इनपुट ले रहे हैं फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी कर रहे हैं बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट. सो दैट मीन्स के स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को वी हैव टू ओवरलोड दीज टू ऑपरेटर्स फॉर एनी ऑफ द क्लास जिसकी हम ऑब्जेक्ट्स की हम क्यू बनाना चाहते हैं. ठीक है, इनको ओवरलोड करना ज़रूरी है. नाउ लेट्स मेक टू एक्सेप्शन क्लासेस, क्लास full and class empty right. So ये दो क्लासेस हमने बना ली हैं, फुल एंड एम्प्टी. ओके, सो अब फुल एक्सेप्शन कब थ्रो होगी? नाउ वी हैव टू चेंज द कोड. इफ एल्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं रही. सो वी जस्ट चेक द कंडीशन इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, देन थ्रो फुल. सो थ्रो दिस एक्सेप्शन. there is no need for the else. Then you check the value of front and all the stuff over here. So जब ये कॉल होगा, now the control plus the object of the full class will be transfer हो जाएगा ये कैच ब्लॉक में. किस कैच ब्लॉक में? the catch block that is for the full type exception. And then here at this point we can throw empty exception. There is no need for the else. Simply write those statements, because जब control इस टाइम पे जब ये statement execute होगी, control will be transfer, तो the statements that are after that throw statements won't be executed. And then over here as well, throw empty. So we should remove this thing. And there is no need for this bracket because हमने else part को ख़त्म कर दिया है. Okay. Now in the try block we try to create the object and then display them over here. Then in the catch block we have the exception full. Here we are going to display the message cout queue is full, right? So जिस पॉइंट पे भी एक्सेप्शन अकर होगी, there is no need to write cout or all those set of statements. यहाँ पर तो एक ही स्टेटमेंट आ रही है. फॉर एग्जाम्पल मे बी यू नीड टू राइट मोर देन वन स्टेटमेंट्स. ठीक है, आपको 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ी हैं जब भी आपके पास ये एक्सेप्शन थ्रो हो रही है. सो उस केस में आप उन 10 स्टेटमेंट्स को बजाय प्रोग्राम में काफ़ी टाइम्स रिपीट करें. यू जस्ट पुट दैम इन अ कैच ब्लॉक, राइट? देन वी हैव अ कैच ब्लॉक फॉर queue empty.
then cout q is empty end line, ठीक है, and then this is the closing bracket. Okay, I think it will work perfectly fine, but let's compile it. Distance undeclared. Okay, so we haven't write a distance class in that file, or haven't include that file that have the distance class. This is just I was mentioning it before. Let's create an integer array. So I think we have to mention the type over here as well, like this, a type undeclared. So okay, now so we include the exception in the class as well now, and now let's try to make this float type object of q class q1 and try to insert 1 2 3 4 5 6 values, and let's see if it catch the exception or not. Let's compile the problem. When we compile the program, it gives an error. So template class a type class q used without template parameter. Okay, so for that I think we can include the exception classes outside. So ये जो हमारे पास exception class हैं, we can put them outside so that they come outside the scope of the template. उस template के scope से बाहर आ जाएं, right? So these are the two classes now, full and empty, and the exception is thrown. It works perfectly fine. Now this is catch full, catch empty, right? And now we create a float, a q1 that is an object of q class that is able to store floating point values. Now compile and execute it. Perfectly fine. Insert value 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 0.6. So 1 2 3 4 5 values are inserted. Now it displays the message queue is full. Press any key to continue. Okay, what if we don't insert, we just insert 5 values? The type of the queue is now character. Now compile it and execute it. A, B, C, D, E, and Q is A, B, C, D, E. No exception is thrown, right? What if we want to display, now we want to check whether the empty exception can be thrown or not. So हमने यहाँ पर display का function call कर लिया और without inserting any value, then we try to insert. But now at this point it will throw an exception, so the control will transfer over here and it won't allow to insert or display. So ये तमाम function execute नहीं होंगे, ठीक है? Because this function will cause an exception to be thrown because q1 is empty. Execute it. Q is empty. Press any key to continue. So we can write here exception compile and execute. Exception Q is empty, right? Okay, now we can also change
we can also put a private data member in that classes, in these classes, and for example we may want to know which function invoke. For example, in case of empty, the only private data member is a string origin. This is we have seen in the yesterday example. In the previous class, in the previous lecture example, कि हमने एक string parameter ले लिया था, and when we call the throw empty, we also pass the name of the function, that is del. ठीक है, हमने ये भी pass कर दिया, और throw empty, that is display. Just हम throw empty में रख रहे हैं. So for that we need a one argument constructor. So that is should be public empty origin with s. So this is an empty constructor. So full के मैं कुछ पैरामीटर नहीं डाला, जस्ट एक एग्जांपल शो करने के लिए कि यहाँ पर इसके empty string, empty जो हमारे पास क्लास एक्सेप्शन की क्लास है उसमें हम पैरामीटर भी रख सकते हैं, and how we can initialize that parameter. So when the exception is thrown, we got an object e over here, and then we can display a message function, जिस फंक्शन से एक्सेप्शन आई है e डॉट origin and line, right, like this. So if I compile this program, we need to include, okay, that is a private data member, so we cannot access it over here because origin is a private data member of empty class. So e, empty class का object e है, so with that object we are not able to access private data members. So what we can do is we can make a function, a public function whose return type is a string. Function name is get string, and what that function will do, it will return a string. Origin return कर देगा, उसकी type क्या string है. So now we can call a function over here, get string, like this. Compile it, so there's no error, execute it. Okay, so exception, queue is empty, function display. So display function ने इसको execute किया है, right, because हमने queue का एक object बनाया character type की value store करने के लिए, and then we call a display function. So we haven't insert any value and we call the display function, so it gives the message that queue is empty here, right. The other thing is the other function is the delete function, right. For example, if we have inserted 1, 2 values, let me comment out, display the queue content. Now we call 3 times delete function. Delete function को 3 times call करते हैं, del, and insert हमने 2 के लिए call 3 times कर रहे हैं. So third time पर वो यहाँ पर इस time पर वो exception throw करेगा because the queue become empty, right. So compile it. Okay, so enter value. Since the queue is object is able to store character value that we have specified in the main function, so a, b. Okay, let me compile it again and execute it. So a, we have to insert 2 values. So 2 value insert करने के बाद उसने क्या किया, q is below, q का हमने display किया, then we call a delete function. So delete a, then it delete b, then it call another time delete, and that time it threw an exception, q is empty, and then it display the function that threw an exception. That is a delete function now here, right. So this is, in this example we write a program from the scratch, and first we convert that program into a template, then we include exception class. Similarly आप यहाँ पर full में भी you can specify the parameter string or integer value or a value of a type, whatever, and
then you can display that which function invoke or which function throw this full exception, right? So that is the end of our today's lecture. We will continue with the example program 2 in our second lecture, in our next lecture, जिसको example program 2 जो हमने linked list से एक data storage class को बनाना है, and we then convert that class into a template class, and then we will insert exception wherever possible, right? Thank you very much. Allah Hafiz.